Okay, we in previous lecture we have seen about the surface tension, about the definition, basics, concept of surface tension, and we also learned that the liquid drop method to determine the relative surface tension of a liquid. So now we are going to learn about the surface tension, another properties such as with increasing the temperature, what will be the effect on the surface tension. Effect of temperature on surface tension. Effect of temperature on surface tension. See, with increasing the temperature, what happen? The state of matter is change. Say for example, when we take the ice cube or solid compound, when it is heated, when it is heated, by external heating, so it will convert it into liquid, and then gaseous में. This is solid, then liquid and gas. Means it shows that with change in the temperature, state of matter change. We are studying the surface tension of liquid. When we heat, when we provide the external heat to this liquid, it will goes to gas. Means the surface tension of a liquid may change. और when we pull down the temperature, उसमें से टेम्परेचर हम निकाल लेंगे लिक्विड में से, सो इट विल कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. For example, when we put the water in a freezer, deep freezer, so ultimately we will get the solid, that is ice, liquid ice or water ice. It is in solid state. So this is about the effect of temperature on matter. So we are going to learn about by taking some of the examples, like some of the liquids and various temperature. Liquids, surface tension, Newton per meter. This is the unit of surface tension. Now the first one is water, 273 Kelvin. थोड़ा रिकॉल कीजिए, 273 केल्विन इज इक्वलेंस टू 0 डिग्री सेल्सियस. ये याद रखना है आपको. 273 केल्विन is equivalent to 273 Kelvin. Now then 293 Kelvin, it is equivalent to 20 degree Celsius. And 213 Kelvin is equivalent to 14 degree Celsius. This is about the temperature. When we increase the temperature from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius and then 40 degree Celsius, what will be the surface tension of water? Then we are going to study about the benzene, then toluene, then acetone, then ethyl alcohol, or we generally it is called ethanol. See, at 0 degree Celsius
or 273 degree Celsius. What is the state of matter of water? Is in solid state. अभी देखा है हमने, state of matter of water is in solid state. Then the surface tension of water is 7.56 Newton per meter. देखिए अब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम लोग, 20 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं एंड द सरफेस टेंशन इज 7.28. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, देखिए 7.56 न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन था वाटर का, वो कैसे हो गया, डिक्रीज हो गया, 7.28 पे चले गया. Then at 40 degree Celsius is 6.96 Newton per meter, 6.96. This is how the decrease in the surface tension. Now we can calculate the delta surface tension of water. कितना आता है देखिए, 56 and 4 means almost 0.6 का डिफरेंस आता है यहाँ पे. 0.6 से क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है वाटर का फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने के बाद. देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेंजीन. बेंजीन का क्या है, 3.16 देन 2.89 gradually decreases 89 and then finally 2.63. See what is the difference? 37 plus 16. How much delta? 37 plus 16. 47 and then 6. 53.53. The delta is 0.53. Then again tolling के बारे में देखते हैं हम लोग, 3.07. See, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड था, नॉट नेसेसरी बेंजीन सॉलिड पे रहेगा. मे बी आई थिंक बेंजीन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड वी कॉल्ड रैदर. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, ये लिक्विड रहेगा. अगेन 40 डिग्री सेल्सियस भी ये लिक्विड में रहेगा. टोल्विन की बात करते हैं, 3.07 है 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका सरफेस टेंशन. देन 2.84 20 डिग्री सेल्सियस और 293 केल्विन पे. सो एट 40 डिग्री सेल्सियस 2.61. सी 2.61, तो ये ऑलमोस्ट ये और ये बराबर में आ रहा है यहाँ पे. तो देखिए क्या है डिफरेंस, 61. 39 प्लस 7 डेल्टा 0.46 का डिफरेंस है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए टोल्विन में. देन वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट एसीटोन. 2.62 surface tension, 2.62, then 2.37 and 2.12. This is about the surface tension of acetone. 2.62. Delta is how much? 2.6 to 2.12. So 0.5. Then alcohol. The example of alcohol, the surface tension is 2.40 Newton per meter. 2.23 again 2.06 means 0.34. See, with from 0 degree Celsius, the surface tension of this liquid is optimum, maximum है. देखो यहाँ पे, just because the state of matter or the molecule are very much tightly bound. क्या होते हैं, molecule nearby होते हैं, इसका bond distance कम से कम रहता है, solid के इसमें रहता है. Once we provide the heat, bond
डिस्टेंस स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली थोड़ा सा बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस आ जाएगा. एंड इन दिस केस मे बी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव shown you that the distance between two atom like this. Actually ऐसे नहीं रहता है, ज़्यादा slightly change होता है. This is about the increase in the temperature, the effect on the surface tension. जैसे ही मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट रहेगा तो सरफेस टेंशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा इसमें. एंड देन विथ हीटिंग द सरफेस टेंशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. देखिए फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल, देखिए बेंजीन, टोल्यूइन, एसीटोन एंड इथिल अल्कोहल. सो मोस्ट पोलर वन इज वाटर, इसका हाईएस्ट ये है सरफेस टेंशन है. देन द बेंजीन इज नॉन पोलर, toluene also non polar one, acetone is also non polar one, and alcohol, ethyl alcohol also polar. So the see the with from top to bottom the surface tension of this liquid gradually decreases. This is about the effect of temperature on surface tension. Now we can see the applications of the surface tension. Application of surface tension. One by one we can see this application of surface tension. We are going to learn about the applications. First one is colloidal chemistry. Surface tension is very helpful in a colloidal chemistry. See, colloidal chemistry, as we know that colloidal particle whose particle size in a liquid in between 20 to 100 माइक्रोन, माइक्रोन है या फिर 200 to 1000 नैनोमीटर में है. सो दिस इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन. In some case the solution is truer, we can having homogeneous phase, but with variation in the size the surface tension is changed, and we can find that the stability of colloidal solution is may differ. So to from the surface tension we can say that the size of colloidal particle and stability also. This is the one of the most important application in chemistry. Then second one is to find the parapore value. Parapore value. Parapore value. It is denoted by P. P is equal to m by d. D and surface tension. M by d and surface tension is 1 by 4. Surface tension raised to 1 by 4. This is the expression for parapore value. We also have the practical on this to find the parapore value. Basically this parapore value nothing but to find that number of CH2 group in a hydrocarbon. तो ये पैरापोर वैल्यू कहाँ पे ये होती है, इंपॉर्टेंट होती है टू नो द, और इनडायरेक्टली वी नो दैट फ्रॉम पैरापोर वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड कर सकते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस we can find that the parapore value, number of CH2 group in a hydrocarbon. This is about the second application. Then third one, to find the air bubbles in a blood. Find air bubble in blood. Okay, see with basically the surface tension of a healthy man is measured. हेल्दी माणसाचा जो सरफेस टेन्शन हा मेजर केला जातो, and if the person having some disease, this shows that the difference is counted and noted down
from this deviation difference in the surface tension, we can come to know that the particular person having specific disease. या एका हेल्दी सुदृढ व्यक्तीचा रक्ताचा हे जो आहे सरफेस टेन्शन आहे तो मोजला जातो आणि नंतर जो आजारी व्यक्ती आहे त्याचं रक्त आणि त्याचं सरफेस टेन्शन मोजल्या जाते. तो जो चेंज असतो ब्लड मधला तो बदल झालेला बदल हा त्या सरफेस टेन्शनच्या याच्यामध्ये स्पष्टपणे दिसतो आणि तो स्पष्ट झालेला जो सरफेस टेन्शन आहे हा मेजर केला जातो आणि त्याच्यावरून ठरवल्या जाते की ब्लडमध्ये कोणता डिसीज आहे, रोग आहे. बेसिकली इन केस ऑफ ब्लड कॅन्सर सच थिअरी इज व्हेरी युजफुल. देन इन ओर 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 म्हणजे खान. खान जिथे कोळसा दगडी कोळसा शोधला जातो किंवा लोह जस्ट ॲल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, देर आर मेनी ओर्स, डायमंड्स. तर तिथे काय होते की ज्या खाणीमध्ये कंटिन्युअसली ते हे केल्या जाते, रॉ मटेरियल काढल्या जाते आणि ते रॉ मटेरियल हा क्रूड असतो म्हणजे तो 100% हे नसतं, शुद्ध नसते. त्याला शुद्ध करण्यासाठी काय केलं जातं, पाण्यामध्ये टाकल्या जातो आणि पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय होते, 2 पार्टिकल लेअर होतात. एक वॉटर सॉल्युबल आणि इनसॉल्युबल. तर इनसॉल्युबल वरती राहतात आणि वॉटर सॉल्युबल खाली राहतात. वॉटर इनसॉल्युबल खाली वरती राहतात आणि हे इन्सॉल्युबल हा इझिली काढण्यात येतात. मग इन्सॉल्युबल कोणते असतात, हायड्रोकार्बन्स जसे की ॲनिमल वेस्ट, त्याने प्लांट पार्ट्स, प्लांटचे बरेचसे पार्ट्स असतात ते हे इझिली काढले जातात आणि शेवटी काय मिळतो आपल्याला इथे एक जो खनिज आहे तो प्युरिफाईड फॉर्ममध्ये मिळतो. फर्दर तो हे केला जातो म्हणजे छोटे छोटे पार्टिकल करून या पाण्यामध्ये टाकल्या जातात जेणेकरून हा इनसॉल्युबल आणि सॉल्युबल मिळेल आणि तो सेपरेट होईल. सेकंड आहे फ्लोटेशन. फोर्थ म्हणजे काय, फेस. फ्लोटेशन. फोर्थ फ्लोटेशनचा अर्थ काय होते, फेस आणि तरंगणे. काय केलं जाते, त्याच्यात डिटर्जंट टाकलं जातं आणि फेस तयार केला जातो एअर बबल सोडून. ते काय होतं, लाईट पार्टिकल जे येतं जे की त्या ओरचे पार्ट नाही आहे तर ते या याने सहज काढल्या जातात वरच्या साईडने आणि तो वेगळा केला जातो आणि मेन ओर काय राहतो तो खाली राहतो. ओर म्हणजे खनिज संपत्ती ही पाण्यामध्ये किंवा त्या याच्यामध्ये खाली तळाला बसते. फिफ्थ, in case of very important application. Now the surface tension in a soap making industry. सोप मेकिंग इंडस्ट्री मध्ये हा सर्वात महत्त्वाचा उपयोग आहे याचा सरफेस टेन्शनचा. नाउ सी that in our house we can use many items made by the soap like detergent, bath soap, then shampoo, then washing for the dishes in a kitchen, hand wash. Now in COVID we oftenly use sanitizer along with the soap solution to clean the bacteria or kill the bacteria and have a healthy life. तो ये इसका एप्लीकेशन क्या है, सोप मेकिंग में काफ़ी मायने करता है. सी देखिए यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं. शैम्पू, then स्टिकर इन एग्रीकल्चर. अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे. सोप हमें 20 रुपीज में मिल जाता है, शैम्पू में भी कॉस्टलियर है, 5 to 6 रुपीज में मिल जाता है. स्टिकर फॉर दिस वी हैव टू पे 1000 per liter.
This is about, when we talking about 1 liter sample, it is about 1600 rupees RS. Then about soap not more than 200 per kg. तो देखिए जैसे कि इसका सरफेस टेंशन अलग अलग है, then the on that basis the application is entirely different. Surface tension अलग है, उसका application अलग है. So as per the surface tension the application is different, and on that basis also the cost is entirely different. So from means the surface tension help in the soap industry to develop the certain kind of product, different product. There are number of products like car wash. Then in industry there is a surface tension lowering agent. In ice cream also we use softener. बरेचसे आहेत जे की आपण याच्यामध्ये application दाखवतात. This is about the application of surface tension. Now we are going to learn about the one numerical, which is only one numerical in your textbook. This is only one numerical, very important. Basically, the surface tension of turbine at 293 Kelvin is 0.028 Newton per meter, and the density of turbine is 0.866 into 10 raised to 3 kg per meter cube. If the surface tension of water is 0.07275 Newton per meter and the density of water is 0.9982 into 10 raised to 3 kg per meter cube, then calculate the drops of liquid to the that of water. तो क्या करना है हमें? रिलेटिव सरफेस टेंशन का हमने एक्सप्रेशन लिखा था, उसे क्या निकालना है? नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स मींस नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ टोल्यूइन टू द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो गिवन क्या है यहाँ पे? हमें फर्स्ट क्या दिया है? टेम्परेचर दिया है 293 केल्विन. तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है सरफेस टेंशन वो दिया है. कितना है सरफेस टेंशन of toluene T is equal to 0.028 Newton per meter. Then density क्या है? Density कितना है? Density कितना है? Rho point density of toluene 866 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Then surface tension of water क्या है? Water क्या है? 0.07275 Newton per meter. Then density of water कितना है? Density of water 0.9982 into 10 raised to 3 kg per meter cube. ठीक है, this is about the given. Then क्या दिया है? क्या निकालना है हमें? Number of drops of water, number of drops of toluene to the number of drops of water निकालना है. क्या निकालना है हमें? Number of drops of toluene to the number of drops of water निकालना है हमें. तो we know that the surface tension of toluene is divided by surface tension of water is equal to the number of drops of water into density of toluene and number of drops of toluene into density of water. This is the expression. ये रो को आप क्या लिख सकते हैं? D भी लिख सकते हैं. रो इज इक्वल टू D. कोई एक यूज कर सकते हैं. सी देन क्या निकाला हमें? नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ टोल्यूइन. क्या दिया है हमें? नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ टोल्यूइन टू द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर का हमें एक्सप्रेशन निकालना है. कितना आता है नंबर ऑफ वाटर? ये हमने ये किया है. तो डेंसिटी ऑफ टोल्यूइन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर
इंटू सरफेस टेंशन ऑफ टोल्विन। तो ये सब वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे। तो क्या आता है देखिए, डेंसिटी ऑफ टोल्विन, डेंसिटी ऑफ टोल्विन कितना है, 0.866 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। देन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 0.9982 into 10⁻³ kg और मीटर क्यूब। एंड क्या है उसके बाद, क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.07275 न्यूटन पर मीटर। देन सरफेस टेंशन ऑफ टोल्विन क्या है, 0.028 न्यूटन पर मीटर। तो इसमें क्या होगा, कॉमन टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सी, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। अब रहा क्या, इसका सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ टोल्विन टू द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या आता है, वो होता है 2.25। व्हेन वी सिंप्लीफाई, calculate all this, then we will get the 2.25 is the number of drops of टोल्विन टू द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर का रेशियो आ जाता है यहाँ पे। तो दिस इज अबाउट द surface tension from the liquid state. We have basically learn about the introduction of surface tension. Then we also seen the liquid drop method, stalagnometer, by which we can calculate the relative surface tension. We have seen that the effect of temperature on the surface tension. Then also we have seen some of the applications of surface tension in a domestic as well as industrial and agriculture applications. Now we have seen this, finally this numerical. From this part, this numerical is one of the most important. If the last semester this question is asked on the numerical, there may be the chance that they will not ask from the surface tension, they will ask in a viscosity. In next lecture we are going to see about the viscosity. Thank you.